Hello students, today we are starting with the next topic, that is Nernst equation. Dear student, in the previous video you have calculated standard electrode potential of the electrode using simple hydrogen electrode, right? So at 298 Kelvin, when the concentration of the electrolyte was 1 molar. So these are called the standard conditions when the temperature is 298 Kelvin and the concentration is 1 molar. But what will be the impact on the electrode potential of the electrode when the concentration is not 1 molar, even the temperature is 298 Kelvin? Now, standard reduction potential of the electrode does not remain equal to the electrode potential at different concentration of the electrolyte. So, in order to find out the exact value of the electrode potential, we have made some changes, and this is called Nernst equation. So, to understand in this equation in a better way, firstly we have to consider a reaction that is taking place. So let us consider this reaction in which zinc 2 positive ions are getting reduced by taking the 2 electrons into zinc solid metal. So which reaction is taking place here? Here is reduction is taking place, in which zinc 2 positive ion is being getting changed into zinc solid. So you can see here there are two parts of the reaction. One is called the reactant part and one is called the product part. So dear students, now you will come to know that how to write the concentration of different ions in this Nernst equation. So first of all, the first parameter is standard reduction potential. It always remains same. Standard reduction potential value remains same. As you can see here, I have placed this value. It is minus 0.76 volt for the zinc electrode. Next is minus RTNF natural log and the concentration of zinc solid and the concentration of zinc 2 plus ion. Now how these values comes here and what does this means? Now the R is called the gas constant and its value is 8.314 as you can see here. Now T is the temperature at which the particular reaction is taking place. This is 298 Kelvin, means the standard temperature. F you are well familiar, it is called the Faraday's constant and the value is 96,500 coulombs. 6. Next is natural log concentration of zinc solid. So just try to understand, this is a chemical reaction in which this is called the reactant part and zinc solid, this is called the product part. So here we write the concentration of the product and here the concentration of reactant. In the product part, there is zinc solid, and whenever we come across such an examples like the solid metal is there or a particular gas, then the concentration we consider as unity. बेटा अगर हमारे पास कोई सॉलिड मेटल ऑब्टेन हो रही है प्रोडक्ट में, जैसे कि यहाँ पे हमें मिल रही है जिंक सॉलिड मेटल, या कोई गैस लिबरेट हो रही है जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गई, राइट, ऑक्सीजन गैस हो गई, क्लोरीन गैस हो गई, कोई भी गैस अगर प्रोडक्ट में हमें मिलती है रिड्यूस्ड फॉर्म में, तो उसकी कंसंट्रेशन को हम कितने लेते हैं? यूनिटी, मींस 1, उसकी जगह जो वैल्यू पुट करनी है वो कितनी होगी? 1, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये 1 लिखी हुई है, ठीक है। नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस, ये जो आयंस की कंसंट्रेशन है ये हमें यहाँ से मिलेगी, ठीक है। जिंक 2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन हमें रिएक्शंस के दौरान गिवन दी होती है, ठीक है, तो हमें ये वैल्यू वहां से मिल जाती है। जैसे सपोज किया 0.01 मोलर है या इससे थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है ना, तो अलग अलग रिएक्शन में दी होती है।
अगर हमें ये सपोज वैल्यू दी है तो हमें यहाँ पे भी यही वैल्यू यहाँ पे भरनी पड़ेगी, मीन्स log of 1 by concentration of 0.01 molar, right, minus the standard electrode potential of the anode. And after that we are writing the same parameters, 2.303, 8.314 and 298 Kelvin, right? So this is the value of R, T and F, right? And after that log concentration of the ions in the product half cell and the concentration of the ions in the reduction half cell, right? Reactant half cell, reactant में हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रही है, concentration of zinc 2 plus ions means the concentration of ions in the anode and then the concentration of ions present in the cathode, right? So you can also write it as the concentration of ions in the product and this is the concentration of ions in the reactant, right? So dear students, now we will try this Nernst equation to find the cell potential at particular concentration of the electrolyte. So let us take the example of Daniell cell in which there is one electrode is zinc and the other one is copper. Zinc is getting oxidized and copper is getting reduced, right? So in the center there is double lines that is called salt bridge, and in this cell representation we can see here that the concentration of ions is different. The concentration of ions, zinc 2 positive ions is 0.1 molar, whereas the concentration of the copper 2 positive ion that is getting reduced here is 0.001 molar, right? So these are some of the very important things which we should keep in our memory, that concentration of the ions in the oxidation half cell and the concentration of the ions in the reduction half cell. So this is cathode where the reduction is going on, and this is the left hand side, it is called the anode where oxidation is going on, right? So what are the number of electrons they are exchanged here? बेटा यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है समझने के लिए कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 और मोर. सो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि 2 positive ions they are getting the 2 electrons, and in the reduction half cell 2 positive ions they are taking the 2 electrons and getting reduced. So this is the overall reaction, as this is very simple reaction, and you can find here that the zinc is liberating only the 2 electrons and copper is taking the 2 electrons for the reduction reaction. So net exchange of the electrons here is 2. So as you can see here, this is a very simple reaction in which the zinc is getting oxidized into zinc 2 positive ion with the release of the 2 electrons, and copper is getting 2 electrons and getting reduced into copper solid. So we can say the net exchange of electron is only of 2 electrons, right? So after that, you can see here that in order to write the Nernst equation for the cell, we firstly write the E of the cell, EMF of the cell is equal to E naught of the cell, or E naught of the cell you can understand well that it is equal to the difference of the electrode reduction potential of the
standard reduction potential of the cathode minus the standard electrode potential of the anode, right? Minus 2.303 into the value of R and the value of T and the value of, this is the value of N and this is the value of F, R, T, N, F, right? So ये सब values को जब हम calculate करते हैं, मैंने अभी भी आपको बताया थोड़ी देर पहले, it is equal to 0.0591. कुछ इसमें मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, इट इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू. जस्ट हमें कहाँ पे थोड़ा देखने की जरूरत है, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड. और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड है, ये हमें तब तक पता नहीं चलता है जब तक कि हम किसी सेल रिएक्शन के लिए उसका बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं लिख पाते हैं. बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन उसका लिखना जरूरी है. समटाइम्स अगर ये भी अंडरस्टैंड करने में हमें दिक्कत हो रही है तो फर्स्टली राइट द रिएक्शन एट एनोड, देन द रिएक्शन एट कैथोड, और देखिए हर इलेक्ट्रोड में कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन हो रहा है. देन राइट द ओवरऑल रिएक्शन and multiply with a particular coefficient to balance the equations, and then we will come to know about the number of electron that is being getting exchanged here. And after that, the next thing is the concentration of the ions in the product and the concentration of ion in the reactant in the cell reaction, right? Or you can say here the concentration. In other words, if it is difficult to remember you, then you can remember here as the concentration of ions in the anode, and this is the concentration of ion in the cathode, right? So this is the cell reaction in which this is the anode and the concentration of the ion is 0.1 molar. So I am writing here 0.1 molar, and then the concentration of the copper 2 plus ion, it is 0.001 molar, right? 1 molar. So these are the things that we have to keep it in our mind. Firstly, the standard reduction potential. तो ये है आपके लिए चैलेंज, इसको कैलकुलेट करना. दूसरा चैलेंज आपके सामने होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, सेकंड चैलेंज. और तीसरा चैलेंज होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कैसे लिखनी है, कौन सी कंसंट्रेशन को कहाँ लिखना है. तो ये आपको पता होना चाहिए. जो ऊपर लिखनी है हमने वो होगी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और जो नीचे लिखना है वो है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द रिडक्शन हाफ सेल. So I think up to this point it is clear to you. After that we have to write the standard electrode potential of the cell. It is given to you. It is about 1.1 volt for the Daniell cell, and it is constant. So as the standard electrode potential of the Daniell cell is given to you, so after that we write the small calculation, that is 0.0591, or you can also take this value 0.0591, approximately this is equal to 0.06, right? So when you divide this with the 2, you will get 0.03. You have to write it in the exact value in the given formula, but when you solve it, then you can, for time saving, you can sort it out by shortcut method, and it is equal to 0.03. So nothing to worry, you can use this value and you will get the same correct answer. Next is log and the concentration of 0.1 molar, and in the denominator part it is 0.001 molar. So you can firstly change these values in scientific notation, because it is very easy to calculate and find out the result. Scientific notation means n into 10 raised to the power n, n into 10 raised to the power n. This is called scientific notation. You firstly change the value in this form, and then it becomes very easy to solve the further question. So here you can see 0.01 molar becomes equals to 1 into 10 inverse 1, and the
concentration of copper 2 positive ion, that is 0.001 molar. It can be written in a better way like 1 into 10 inverse 3, right? So this is the scientific notation. Further solve this question, the standard EMF is remain same, that is 1.1 volt, then 0.03, and then log 1 is to 10 inverse 1 into 10 plus 3. Now this becomes 10 plus 3. So overall resultant, it will become 10 raised to the power 2, and the remaining things remain same. So let's firstly solve this log part, and log 10 raised to the power 2, it can be further solved as 2 log 10. How it is this? Because there is a formula in the log that when log m raised to the power n, it is solved, it becomes n log m. जो पावर है बेटा वो आगे आ जाएगी, और log m का वैल्यू हमें जो है log टेबल से फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो टर्म m है वो बहुत सिंपल है, इट इज 10, तो इसके लिए हमें कोई log टेबल देखने की जरूरत नहीं है। द पावर ऑफ 10, इट इज जस्ट नथिंग बट जस्ट द पावर ऑफ anything, right? It is, if it is 100, then it becomes the power of 10 is 2. So log 100 is equal to 2 and log 10 is equal to 1. So 2 into 1, अगर हम 1 नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रिजल्ट तो सेम ही आएगा। सो 2 जो मेन फैक्टर है, पावर जो थी वो यहाँ पे मेन अपना इम्प्रेशन रखेगी, उसका मेन वेटेज होगा यहाँ पे, दैट इज 2 इंटू 0.03। तो सेम वैल्यू जो हमने डिवाइड किया था पहले, अभी फिर से वही आ जाएगी, इट इज 0.06, और इसको हमने माइनस कर देना है 1.1, दैट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो बेटा मैंने देखा जब भी मैं क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों को देता हूं तो बच्चे वैल्यूज पुट करने के बाद थोड़ा सा उसको सॉल्व करते हैं 2 स्टेप्स तक, उसके बाद दे लीव्स द क्वेश्चन एज सच। बेटा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जो आपको नहीं आए, बट देर इज़ वन थिंग टू रिमेंबर दैट कि हमें सिस्टमेटिकली चलना है। पहले हमारे को क्या चीज़ सॉल्व करनी है, फिर क्या चीज़ पे फोकस करना है, कौन सी वैल्यूज़ को हम शॉर्टकट वे से याद रख सकते हैं और उसकी वैल्यू जस्ट हमें डायरेक्टली पुट करनी है और आगे का आंसर निकल आएगा, अपने आप निकलेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, हाँ यहाँ पे हमें जो राइट आंसर मिल रहा है, ई ऑफ द सेल, EMF of the cell at different concentration other than the standard form, it is very less, 1.04, that is quite less than the standard EMF. Standard EMF is 1.1 volt, तो उससे थोड़ा सा little bit कम निकला अभी यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम EMF of the cell जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, कोई एक एग्जाम्पल या कोई प्रॉब्लम हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो देखते हैं हम सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ली हुई है हमने एक पर्टिकुलर रिएक्शन की। सो दिस इज क्रोमियम विच इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन एंड आयरन फेरस आयन है यहाँ पे, और ये हमारे पास रिड्यूस हो रहे हैं फेरस सॉलिड में, राइट। सो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, ई ऑफ द सेल मतलब सेल पोटेंशियल एट पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन, ठीक है, फॉर द गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन। मीन्स जो हमें चीज दी हुई है ये सेल रिएक्शन नहीं है, ये क्या चीज है, दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन इन विच द एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शन इज separated by salt bridge double line, and this single line what it represents, single line represents the partition phase between the ions and solid metal electrode. Metal electrode is solid and it is dipped in the ionic solution or the electrolyte of the same metal ion. So in this way we have to solve this question. So let us solve it step by step manner. So firstly, the next thing that is also given to you is standard electrode potential of these two different metals. So यहाँ पे कैथोड कौन सी होगी और एनोड कौन सी होगी, दिस इज एनोड, ठीक है, ए एनोड, दिस इज कैथोड सी। तो हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे, ई नॉट ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ द सेल मिलेगा हमें
the standard electrode potential of the cathode minus standard electrode potential of the anode से, ठीक है, कैथोड माइनस एनोड। तो यहाँ पे हमें पहले से सॉल्व नहीं मिल रहा है, तो हमें ये खुद सॉल्व करना पड़ेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो फर्स्ट जो चैलेंज हमारे को है वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हमें नहीं गिवन है, इसको फाइंड आउट करना है। और दूसरी चीज़ फिर हमें सेल रिएक्शन से पता चलेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम देख रहे हैं इन द एनोड हाफ सेल देयर आर द ट्रांजेक्शन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 पॉजिटिव आयंस में ऑक्सीडाइज हो रहा है। बट जब हम कैथोडिक रिएक्शन में देख रहे हैं यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले करके रिड्यूस हो रहा है फेरस मेटल में, ठीक है, आयरन मेटल में। फेरस आयंस जो है वो आयरन मेटल में सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे रिड्यूस हो रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है। तो नाउ वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि वेदर द ट्रांजैक्शन इज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन और वेदर द ट्रांजैक्शन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सो लेट अस कंफर्म दिस थिंग बाय सेकंड चैलेंज जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता करना है, इसके लिए हमें बैलेंस्ड एक रिडॉक्स रिएक्शन लिखना पड़ेगा बाय कंबाइनिंग द 2 हाफ सेल्स। सो लेट अस डू दिस। एंड अगर ये 2 चीज़ें अगर आपको पता लग जाती हैं तो आपका आधा जो न्यूमेरिकल है वो वही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो लेट अस डू दिस वन बाय वन। सो रिएक्शन एट एनोड, एनोड्स पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, ऑक्सीडेशन होगा मेटल का, और जिससे इलेक्ट्रॉन्स हमें कितने मिल रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पे फेरस आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, और ये किस में चेंज हो रहा है, फेरस सॉलिड में, राइट। तो इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस इक्वेशन वी विल बैलेंस द second equation by 3 and the first equation by 2. So by multiplying with these coefficients, now we will get the exact number of electrons they are producing at the anode and the exact number of electrons that is consumed at the cathode. Because 3:2 is 6 and now the 2:3 is 6. So number of electrons they will get cancelled out and we will get this resultant reaction, right? In this reaction you can see that there is the gaining of 3 to the 6 electrons exchange is there. So now dear students, we will calculate the cell potential at given concentration of the ions and using the same Nernst equation. So E of the cell, that is EMF of the cell, it is equal to standard EMF of the cell minus 0.0591 divided by N. N is the number of electron exchanged in this redox reaction, and log concentration of the oxidation half cell and the concentration of the reduction half cell. So reduction takes place at cathode in the product side, and the concentration of the log concentration of chromium 3 plus ions. So chromium 3 plus ion means the concentration of ions in the product side. So this is the product side in this redox reaction, so which contains 2 elements. One is the iron is in the solid phase, so its concentration is unity, one more, right? But the concentration of the chromium 3 plus ion, it is 0.01. I have written this value from the cell reaction as given above from this side, right? So this is the anode side, or when you write the redox reaction, this is the overall redox reaction, this becomes the ionic concentration in the product side. So you have 2 options to write. If you have the cell representation reaction, then you can write the value from reference. You can use this value from the anode, or if you are having the redox reaction, then you will take the value from the product side, ionic concentration in the product side. And this is iron
iron is in the reactant side and the value is 0.01 molar, and the concentration of chromium 3 plus iron, it is 0.01 molar. The same way as we have done in the above question we will write here. Now what is this 2 and 3? 2 and 3 are the powers of these ions. As you can see in the balanced equation, these are like the stoichiometric coefficients. आयरन के साथ यहाँ पे कितना लगा हुआ है? 3 stoichiometric coefficient लगा हुआ है. तो सेम वे आयरन का जो कंसेंट्रेशन हमें लिखेंगे यहाँ पे, उसके ऊपर पावर कितना हो जाएगा? 3. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा याद रखने के लिए. सिमिलरली क्रोमियम 3 प्लस आयन का जो कंसेंट्रेशन है वो कितना है? 0.01 मोलर. सो ये 0.01 मोलर के साथ क्रोमियम के साथ जो स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा हुआ वो है 2. तो इसकी जो पावर है वो भी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2. ये थर्ड ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बच्चे मोस्टली गलती करते हैं. ये थर्ड चैलेंज है उनके लिए. यहाँ पे आकर के बच्चे जो है मोस्टली गलत कर देते हैं क्वेश्चन कि हमें ये पावर यहाँ कैसे लिखना है ना. आफ्टर दैट यू राइट दिस power this values in the scientific notation form, like as you have done the previous question. So it will become 1 into 10 inverse 2 raised to the power 2, and 0.1 ये हो जाएगा हमारे पास 10 inverse 1 power 3. right? Is it visible to you? Okay, I'm using the dark pen. So 1 is to 10 inverse 2 raised to the power 2, and 1 is to 10 inverse 1 raised to the power 3. right? So we will solve it. The value of n is 6 here, right? So it is very easy to solve this question, and the standard EMF of the cell is the constant standard reduction potential of the cathode minus the standard reduction potential of the anode. right? It is quite easy to calculate, so I will not discuss it in detail. It will come out to be positive 0.30 volt. This standard EMF is of the cell is always positive. If it is not positive, I have told you earlier that the reaction is not feasible, right? And the next thing, we will divide this factor. It is looking very simple. We will get 0.01. This is the same value as above. Next is the 0.01. We will get this value by dividing the 0.06 by 6. And the next thing is the square of 10 inverse 2 is 10 inverse 4, and divided by 10 inverse 3. 10 inverse 1 raised to the power 3 कितना हो जाएगा? 10 inverse 3. So ultimately when we will solve it, 10 inverse 3 will come in the numerator part and it will become 10 raised to the power plus 3. So resultant value will be 10 inverse 1. So log 10 inverse 1 will become minus 1 log 10. So log 10 का वैल्यू कितना होता है मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज इक्वल टू 1. सो मेन चीज हमारे पास क्या रह गई? माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 कितना हो जाएगा? दिस वैल्यू विल बी minus 0.01, and this value will become minus 0.01, and when it is subtracted from plus 0.30 volt, the resultant value will come out to be minus minus plus हो जाएगा, so it will become
plus 30 plus 0.01. So ultimately we will get plus 0.31 volt. So this is your required answer, and this is very easy, and just go through the question and see where is the difficulty, where is the problem where you are not able to solve this question. Memorize these points and surely you will solve it and you will get the full marks. In the next question with this next time we will study the next topic, that is the calculation of the equilibrium constant Kc from the Nernst equation, right? So you can also ask your doubt regarding this question. So all the best students, keep on studying at home.